हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक, our favorite topic, differentiation. Yes, today we will discuss miscellaneous exercise of chapter 5 of our NCERT book. Let me start. I am taking one of the most important question of our NCERT book, miscellaneous chapter 5. Okay? Yes. Question is, if x in square root 1 plus y plus y in square root 1 plus x is equal to 0 and x varies in between minus 1 to 1, then we have to prove dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus x square. तो बेटा इसके लिए हमारे करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन. यस, given that given condition x in square root 1 plus y plus y in square root 1 plus x is equal to 0. बेटा अगर आप लोग इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो इट मे बी पॉसिबल दैट वी कांट गेट दैट आंसर. ओके, जितने भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उस पैटर्न को हमारे को फॉलो करना होता है, तो इजीली हम लोग आंसर को अप्रोच कर सकते हैं. फॉर दिस क्वेश्चन आई ट्रांसफर वन टर्म ऑफ देम, यस, like x in square root 1 plus y is equal to minus in square root 1 plus x. Can we squaring both the side? Then we get x square 1 plus y square 1 plus x. Is that clear? Now can we solve the brackets? X square plus x square y square plus xy square. Now we again transfer this term, then x square minus y square plus x square y minus xy square is equal to 0. Yes, can we factorize them in these and in these terms? So it is x plus y and x minus y. Okay, and in this if we take common x, y, then we have x minus y is equal to 0. Now can we take common x minus y? Then x plus y plus xy is equal to 0. Okay, here we can say it is product of two terms will be 0, then maybe it will be 0 or maybe it will be 0. Yes, if we take x minus y is equal to 0, it means x is equal to y. तो यह टर्म को जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. So we have to take x plus y plus xy is equal to 0. Is that clear? Now in these terms can we take common y? Then x plus 1 plus x y is equal to 0. Clear? Now can we transfer this term here? Then 1 plus x y is equal to minus x, y is equal to minus x upon 1 plus x. बेटा इस क्वेश्चन में केवल और केवल ये यहां तक जो अपन ने कैलकुलेट किया इसी की इंपॉर्टेंस थी. अब आप इजीली सोल्व कर सकते हो. वी कैन यूज हियर क्वोशिएंट रूल, u upon v, then differentiation of this dy by dx is equal to 1 plus x whole square of denominator and 1 plus x as it is, differentiation of minus x minus 1 minus x as it is, differentiation of this 1. Can we calculate it? minus 1 minus x plus x upon 1 plus x whole square.
minus x to plus x cancel out, so we get an answer minus 1 upon 1 plus x whole square. It is our answer. Now I am taking some another most important question of miscellaneous 5, and question is, if x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to c square, here a, b, c are arbitrary constants and c is greater than 0, then we have to prove this term. This term means 1 plus dy by dx whole square whole raised to power 3 by 2 upon d2y by dx square means second order derivative. This term is constant and independent of a and b. कहने का मतलब यह है कि इसकी जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट टर्म आएगी, कुछ भी आ सकती है, लेकिन उसमें a और b नहीं होंगे. इज दैट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट. सॉल्यूशन. गिवन x minus a square plus y minus b square is equal to c square. Yes, in this question we can differentiate this. Okay, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको. It is function in function. Okay, here also, and it is constant term. So differentiation of this mention here, differentiating with respect to x, 2x minus a into 1. पहले पावर का डिफरेंशिएशन किया और फिर x का हो गया 1, a का कांस्टेंट 0, प्लस 2y minus b into dy by dx is equal to 0. Now can we take 2 common and this 2 convert with 0? So we have x minus a plus y minus b dy by dx is equal to 0. Can we shift this term? So dy by dx is equal to minus x minus a upon y minus b. Now we differentiate this term again with respect to x to find d2y by dx square. Okay, yes, it is u upon v. So d2y by dx square is equal to minus sign in front of this term y minus b whole square, y minus b as it is, differentiation of x minus a 1 minus x minus a as it is, differentiation of y minus b dy by dx. Is that clear? Yes. Can we put here value of dy by dx? Then we get minus y minus b whole square. It is y minus b minus, अब बेटा इसकी वैल्यू माइनस में है, सो माइनस माइनस प्लस x minus a, x minus a upon y minus b. Is that clear? Okay, now can we take LCM here? So we get d2y by dx square is equal to minus, एलसीएम जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो y minus b whole cube and it is y minus b whole square plus x minus a whole square. Is that clear? And we all know that what is the value of this? This is equal to c square. So d2y by dx square is equal to minus c square upon y minus b whole cube. Is that clear? तो बेटा हमारे पास dy by dx की वैल्यू है एंड d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू है. अब हम लोग करना कुछ नहीं है ज्यादा, इन दोनों वैल्यूज को इस टर्म में पुट कर देना है.
Okay, I am putting these values in this term. Okay, can I erase it? Then we get 1 plus whole square. Here I write here the value of dy by dx x minus a upon y minus b. जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. सो हियर x minus a upon y minus b raised to power 3 by 2 and what is the value of this? Minus c square upon y minus b whole cube. Okay, can we calculate it? Yes बेटा, देखो ये होल स्क्वायर है. Can we take LCM here? Then LCM is y minus b whole square and it is y minus b whole square x minus a whole square upon minus c square y minus b whole cube. Now what is the value of this? We all know that. Again put c square, then we get c square upon y minus b whole square raised to power 3 by 2 upon minus c square upon y minus b whole cube. Here it is c square and it is y minus b whole square. तो ये जो स्क्वायर्स है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या? 3 by 2 है पावर. ओके, देन वी गेट c cube upon y minus b whole cube and minus c square upon y minus b whole cube. That will be cancelled. Then our answer is minus c. It is a constant and independent of a and b. So we prove that this term is independent of a and b and it is a constant term. Okay, now I am taking one another most important question of our NCERT book miscellaneous 5. Question is differentiate sin square x with respect to e raised power cos x. बेटा आप देखो जरा, इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है इस टर्म के रेस्पेक्ट में. अभी तक हमने डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में किया है, लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है. ये देखा जाए तो एक अलग सा टॉपिक बन जाता है. इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अपने को हर बार दोनों टर्म्स को अलग अलग वेरिएबल्स में अज्यूम करना है. लाइक दैट, लेट z is equal to sin square x and y is equal to e to the power cos x. ओके बेटा, कहने का मतलब यह है कि इस टाइप के सभी क्वेश्चंस के लिए जहां हमारे को एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है अनदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में, तो हमारे फर्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास जिसको डिफरेंशिएट करना है z अज्यूम करना है और जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको y अज्यूम करना है. इज दैट क्लियर? नाउ वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन with respect to x and differentiate this function also with respect to x. Okay, like this, differentiating with respect to x. So dz upon dx is equal to 2 sin x into cos x. It is function in function. बार बार बेटा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. ओके, एंड in this term dy by dx is equal to e to the power cos x into minus sin x. Okay, ये भी function in function. Now we want to find dz over dy. हमें dz over dy चाहिए. It is dz over dx upon dy over dx. So we put
the values of this and this from here and here, then we get 2 sin x cos x upon e raised to power cos x into minus sin x. Then sin x to sin x cancel out. So dz upon dy is equal to minus 2 cos x upon e to the power cos x. Is that clear? That is our answer. You can practice these types of question based on this topic. Okay, thank you. Best of luck.